See, this is the paper that we have, and in this particular paper, it's a 1 hour 15 minutes paper. The total marks are 30. There are 2 questions that you have to do. Each question is of 15 marks. The total time is 1 hour 15 minutes. You have to allocate the time in such a way that you are able to complete it on time. I would recommend 37.5 minutes on question 1 and 37.5 minutes on question 2. But question 2 is a bit lengthier, so you can, adjust your time in such a way that थोड़ा सा उसको ज़्यादा time दे दो, ठीक है? But question 2 is about graph plotting. इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको time ज़्यादा लगता है. But that will get easier with practice. Once you do a lot of practice. Actually, in this particular experiment, a student investigates the vertical oscillations of a solid cylinder which floats in a cooking oil. So what you have to think is that you are in a laboratory, and once you are in the laboratory, what you're doing is that you have the cylinder in front of you and it's floating on a cooking oil, right? You have a cylinder, it's floating on a cooking oil. A student places the cylinder of mass in the oil. So he just puts that cylinder in the oil, and the cylinder is displaced vertically from its equilibrium position and release so that it oscillates. It will oscillate all the way. The period of these oscillations is determined. We calculate the period of those oscillations, and a number of cylinders of different mass are available. There are different cylinders of different masses are available. It is suggested that the relationship between T and M, where T is the period and M is the mass, is given by T is equal to 2 under root pi M. You have here sigma kr square, where sigma is the density of the oil and k is a constant. You have k as a constant here, and sigma is the density of the oil. Design a laboratory experiment to test the relationship between T and M. So they have asked you to design and use T and M, right? These two words, these two variables, T and M, they're very important. Your entire question is based on these two, T and M. Explain how your results could be used to determine a value for K. And then you'll figure out how you can use the results to find the value of K. So T and M are the most important things here. And then we have the value of K, which we'll see in the method of analysis, right? You should draw a diagram on page 3 showing the arrangement of your equipment. And in your account, you should pay particular attention to the procedure to be followed, number 1. Number 2, the measurements to be taken. Number 3, the control of variables, the analysis of the data, and any safety precautions that need to be taken, right? What we're going to do is we are going to break this question into different parts. And I'm going to tell you all of those, okay, what are the different parts that you need to look for. ठीक है, उसमें आपके पास 4 रूल्स किसी को याद है जो मैंने बताए थे? पहला क्या था? What was that? Defining the problem. ठीक है, first one was defining the problem. The second one was method of data collection. The third one was method of analysis. तीसरे नंबर पे. Fourth is additional detail and any safety considerations that you are taking. So first rule here, the first statement that will score you 2 marks is defining the problem. सबसे पहले आप करेंगे define problem को, कि आपने करना क्या है. और number one is defining the problem. इसके 2 marks होते हैं. Defining the problem में आप लोगों ने what you have to do is you have to state that what is the dependent variable, what is the independent variable, and what is a constant. And where would you go? You will go right at T and M, and you will figure out which one is the independent variable and which one is the dependent variable. मुझे ये बताएं कि इसमें से independent variable कौन सा वाला है? Independent कौन सा? Very good. The mass of the cylinder is the independent variable. Very good. आप उसको vary कर सकते हैं because you have
different masses which are available. So mass is the independent variable here. And what is the dependent variable here? That is time. So this will score you. Mass is independent. आप masses को change कर रहे हैं. Time उस पर depend कर रहा है mass पे. क्योंकि जब आप mass को change करेंगे, तो time change होगा. आप equation को भी देखा करें. इन दोनों को देखने के बाद equation पे जाया करेंगे क्या चीज में change करूंगा तो मेरे पास क्या होगा. सबसे पहले आपने ये बताना है defining the problem में that mass of the cylinder M is the independent variable and period T, the period T that we have is the dependent variable. This statement will score you 1 mark out of 15. So stating what is the dependent variable, what is the independent variable will score you 1 mark out of 15. Number 2, which thing will you keep constant in this experiment? किसी चीज को constant रखेंगे आप? Equation पे जाएंगे, direct equation पे जाया करें. अगर आप इक्वेशन पे चले जाएंगे तो चीजें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी. यू विल कीप द रेडियस कांस्टेंट. मास चेंज हो रहा है, ठीक है, आप रेडियस को कांस्टेंट रख दो, ठीक है. वो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोगों ने आगे उसको आइडेंटिफाई करना है, निकालना है, वो हम मेथड ऑफ एनालिसिस में देखेंगे. वो आप मेथड ऑफ एनालिसिस में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली बता दिया. सो व्हाट इज कांस्टेंट हियर? कीप द रेडियस ऑफ द सिलेंडर कांस्टेंट. दैट विल स्कोर यू अनदर मार्क. So keep the second point here is, this is the first mark here. The second mark is keep radius of the cylinder constant. You score another mark here. So you scored 2 marks out of 15. आराम से. पहला मार्क कैसे मिलेगा? इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का, दूसरा होगा कांस्टेंट का. पहली स्टेटमेंट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. आपने 1/4 ऑफ द स्टेटमेंट कर ली है. डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज डन नाउ. यू हैव डिफाइंड द प्रॉब्लम, राइट? द सेकंड पार्ट हियर इज मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन में आपने सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है. उसका एक नंबर है, उसको लेबल करेंगे आप. जो आपको डायग्राम यूजुअली गिवन होता है उसी को ड्रॉ करके आपने मॉडिफाई करना होता है थोड़ा सा. आप लोगों ने क्या करना है? You will draw a diagram and you will have all the things that they have stated in the question and you will label that diagram precisely. Also you have to, in the method of data collection, you have to look particularly at M and T because you have to take the values of M and T. M कैसे आप measure करेंगे? T आप कैसे measure करेंगे? ये आपको 2 नंबर यहाँ से और मिल जाएंगे. एक नंबर आपको डायग्राम का मिलेगा, एक आपको मिलेगा M का. कैसे आप मेजर करेंगे? क्योंकि आप T और M को देख रहे हैं. और उसके बाद आप T कैसे मेजर करेंगे वो भी आप मुझे बताएंगे अभी. उसके बाद आपने रेडियस को कांस्टेंट रखा है तो उसके लिए आप डायमीटर कैसे मेजर करेंगे. तो ये सारी चीजें आ जाएंगी इन द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. 4 marks. It's very easy. I'm telling you the key point here that the equation matters a lot. Just go to the equation. And these variables here, T and M, and this, they are very useful because आपका सारा क्वेश्चन तो यहीं पे आंसर हो जाता है इनको देख के. अगर किसी को तरीका आ जाता है, इसको तरीका नहीं आता वो कुछ भी नहीं कर सकते. It's only a tricky paper. It's a very technical paper. Those who know the trick, they are going to ace it. Very tricky paper, but very easy if you know the trick. ठीक है जी. तो दूसरा है, what you have to do is you have to draw a label diagram of a workable experiment where you would have a beaker with cooking oil on a bench. You would have a beaker and that would be placed on a bench and that would have a cooking oil. The container can be supported by a stand where stand is on the bench, right? ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं. Cylinder would be partially submerged in the oil because it's going to oscillate and you will label the cylinder and the cooking oil. So what you're going to do is, ये diagram की जगह बनी होती है, ये आपके पास lines में आपने defining the problem यहाँ से start करना. ठीक है, पहले आप defining the problem आपने लिख दिया. Defining the problem यहाँ पे आपने सारा लिख दिया जो मैंने आपको ऊपर बताया था. ठीक है, यहाँ पे आपने 1 2 सारा करके उसके बाद method of data collection पे आ जाए.
What you'll do is you have here the cylinder, and for example, we can have a container here which is supported by a stand or a beaker here. For example, we have a beaker here like this, and it is on a bench, for example, like this. Okay? And there is some cooking oil, which is you label the cooking oil, and you will also submerge this beaker here, and which is partially submerged like this. ठीक है? Partially submerged होगा, ठीक है? और आप उनको लेबल कर दें. This is the cylinder, and this is the cooking oil. आपने लेबल जरूर करना. सिलेंडर है, उसका रेडियस R है, ठीक है? जो आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी को आपने यूज करना है. This is cylinder and this is the radius R, and this is the cooking oil. This is a beaker, and this is a bench, right? How will you determine the mass? देखिए एक नंबर आपको यहाँ मिल गया out of 4. Method of data collection के 4 marks हैं. इसके 2 marks थे. आपको 1 mark मिल गया लेबल डायग्राम में. यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि लेबल डायग्राम आपने डायग्राम को लेबल करना है. मैं तो खुद से वैसे ही बता रहा हूँ आपने क्या करना है. लेबल डायग्राम ऑफ अ वर्केबल एक्सपेरिमेंट, ठीक है? यू विल हैव अ बीकर. Label diagram of workable experiment, beaker. So I have a beaker with a cooking oil, beaker with a cooking oil on a bench, as I've already told you here, and the cylinder is partially submerged. Okay, cylinder is partially submerged in the cooking oil, and you will label the cooking oil and the cylinder, right? अच्छा, उसके बाद आप method बताएंगे how to determine the mass. You say that we will use a top pan balance to measure the mass of the cylinder. और additional detail में मैं आपको अभी बताता हूँ उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं. So you'll write here that in the second part of the method of data collection, we will use a top pan balance. Yeah, I will use a top pan balance. Top pan balance to determine the mass M of the cylinder. 1 mark for how will you determine the mass. We are going back to M and T. We are determining M and T, and now how we will determine the T time कैसे find करेंगे oscillations का? You will use a stopwatch to measure the oscillations of the beaker. एक और नंबर मिल गया. We will use a stopwatch or a timer. जो चीज आप लिख रहे हैं ना, आपको अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स चीज लिख रहे हैं तो आपको फर्दर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो इतना कॉम्प्लेक्स लिखने का फायदा नहीं होता. तो एडिशनल डिटेल में मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है. यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखें जो आप कर रहे हैं, ठीक है? उसको आप वरना आपको हर चीज बतानी पड़ेगी. We will use a stopwatch or a timer to time the oscillations. ठीक है? तो you'll score another 1 mark here, 1 mark here, 1 mark here. You scored 1 mark on drawing the diagram. जो final mark है वो कैसे आएगा? You will use a vernier caliper in order to, or you can use, if it's a very small diameter, then you can use a micrometer screw gauge. So how will you determine the diameter D of the cylinder? आप देखिए, आप इस वक्त लैब में हैं और आपने इक्वेशन पे जाना है और डेटा पे जाना है. आपके पास ये दोनों वेरिएबल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपने जिस चीज को कांस्टेंट रखा है उसको भी आपने मेजर करना है ना. What you will do is we will measure the diameter of the cylinder using a micrometer screw gauge or a vernier caliper. Okay, so congratulations, you scored total 6 marks out of 15. तीसरी चीज है method of analysis. Method of analysis. वो तो एडिशनल डिटेल में लिखेंगे आप, मैं वही बता रहा हूँ. वो आप एडिशनल डिटेल में लिखेंगे, आप उसको और नंबर वैसे ही मिल जाएंगे.
एडिशनल डिटेल के टोटल 5+1 5 मार्क्स होते हैं, एडिशनल डिटेल के 1 मार्क होता है सेफ्टी कंसिडरेशन का। मेथड ऑफ एनालिसिस, राइट, मेथड ऑफ एनालिसिस में आप क्या करेंगे? इन मेथड ऑफ एनालिसिस you have to state clearly that you have to plot a graph. You have to plot a graph to determine the relationship between T and M. इसमें आप पहले तो कहेंगे कि we will plot a graph, और आप साथ ये भी लिखेंगे कि relationship is valid if it is passing through the origin, or if it's not passing through the origin, you'll write that it's a straight line and it is linear. लेकिन यहाँ पे what we're going to do, we're going to solve the equation in such a way that we get a straight line, and we'll see whether it passes through the origin or not. Let's see that. और तीसरी चीज आप क्या करेंगे? आपने ये k फाइंड करना है। मेथड ऑफ एनालिसिस में आपने ये k फाइंड करना होता है। ये जो चीजें होती है ना, ये एंड पे यूज योर रिजल्ट्स, ये आपने मेथड ऑफ एनालिसिस में फाइंड करना होता है। 3 मार्क्स टोटल, 3 मार्क्स टोटल आपका है। व्हाट यू गोना डू इज यू विल गो बैक टू द इक्वेशन। आपने क्या करना है? आपने मेथड ऑफ एनालिसिस में you have to go back to the equation. The equation is T is equal to method of analysis. You have the equation T is equal to total 3 marks का है। एक नंबर मैं बताता हूँ किस तरह से डिवीजन होगी मार्क्स की। 2 under root pi m sigma k r square. And k is a constant here. You have m here, right? What you're going to do is you're going to take a square on both sides. This is t square. This is 4 pi m sigma k r square. This equation becomes t square 4 pi sigma k r square m. You'll write here that plot a graph of t square against m. आप इसमें log भी, log जो है LG log is something that you will आपको कितने लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको तो log का पता है। So you will write here that plot a graph of t square against m. So this will score you how much marks? 1 mark. ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि draw a table, ठीक है, stating the values of t square and m, right? आप लिख सकते हैं, अच्छी बात है लिखना। Draw a table with column headings of t square, साथ उसका unit, t square and m along with their units, जैसे आप प्रैक्टिकल में करते हैं, with their units, and use those readings to plot a graph. To plot a graph, we can write it like this as well. Draw a table with the column headings of जो चीज आपने निकाली है t square m को आपने वेरी किया है, number of observations t1 t2 को आप टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे you can make a table like this, small ना, this is the number of observations। आप जो प्रैक्टिकल में करते हैं, number of observations आपके पास यहाँ पे t1 आ गया, या बल्कि पहले आप m कर दें, यहाँ पे m साथ आप ग्राम में करें तो ग्राम कर दें, किलोग्राम में करें तो किलोग्राम कर दें, ठीक है। I'll write here grams for example, then you have t1 seconds, t2 seconds, t average seconds, capital T is the time period, seconds and t। सिर्फ आपने ये headings लिखनी है, आप readings लिखने की जरूरत नहीं। And use those readings to plot a graph. Draw number of observations बेटा, this is number of observations 1 2 3 and so on 5 6। उसके बाद आपको दूसरा मार्क मिलेगा रिलेशनशिप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रिलेशनशिप इज वैलिड इफ अ स्ट्रेट लाइन इज प्रोड्यूस्ड व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। क्योंकि आपके पास यहां से ओरिजिन बन रहा है, ये y इज इक्वल टू kx का ग्राफ नहीं होता जैसे, तो ये t स्क्वायर k, मैं इसको k को कांस्टेंट कह देता हूं, यहां पे km का ग्राफ बन रहा है। सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। यू राइट हियर दैट ये दूसरा नंबर आपको यहां मिलेगा। अगर ये ओरिजिन से पास ना कर रहा होता तो आप लिखते रिलेशनशिप इज वैलिड, यू राइट हियर सेकंड मार्क, रिलेशनशिप is valid if a straight line
अब ये देखिए वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन से पास कर रहा है, कोई अगर ओरिजिन से पास कर रहा हो तो आप ना लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है y इज इक्वल टू mx की लाइन है, ये कोई साथ प्लस सी नहीं आ रहा, इंटरसेप्ट नहीं आ रहा, अगर कोई इंटरसेप्ट आ रहा होता प्लस सी आ रहा होता तो आप लिखते हैं कि इट डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। देखिए ये इट्स पेपर 5 इज एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ योर मैथमेटिकल स्किल्स, योर फिजिक्स, आपका जो 11 12 ईयर जो आपने पढ़ा है उसका निचोड़ है। पेपर 5 is a genius paper. It is a genius paper. Relationship is valid if a straight line passing through the origin is produced. 2 नंबर आपको यहां मिल गए, ठीक है। थर्ड मार्क स्कोर करना थोड़ा मैथमेटिकल है। Relationship is valid if a straight line passing through the origin is produced. So you scored 2 marks in mathematical analysis, and now you have scored total 8 marks out of 15 in your paper 5 question number 1. And I'm going to tell you that scoring 30 out of 30 is very convenient and very easy if you know the details. You can score 30 out of 30 in P5. 30 out of 30. Number 3, you have to find the value of K. अब आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया था उसमें आपके पास क्या था, ग्रेडियंट था। आपने ग्राफ ड्रॉ किया था टी स्क्वायर और एम का, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ग्राम लिया, किलोग्राम लिया, व्हाटएवर। अगर आप इसका स्ट्रेट लाइन देखें तो आपके पास इक्वेशन बन रही है। अब इक्वेशन कैसे यूज होगी देखिएगा, इक्वेशन यूज करना बड़ा जरूरी है। इसमें इक्वेशन को आपको जो भी है करना पड़ेगा। यू हैव हियर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 pi m sigma k r square, and we plotted a graph of t square and m. So what is your gradient here? Your gradient here is 4 pi sigma k r square. This is sigma. Achha. So your gradient here is 4 pi sigma k r square. आपने क्या निकालना था? आपने k निकालना था। आप k को सब्जेक्ट बना दें, k is equal to 4 pi over gradient into sigma r square. This will score you another mark. Additional detail, the additional detail including safety considerations. अच्छा जी, मुझे ये बताएं, इसके टोटल मार्क्स होते हैं, 1 नंबर होते हैं सेफ्टी कंसिडरेशन का और 5 नंबर होते हैं एडिशनल डिटेल्स के। आपका जो सेफ्टी इसमें है वो आप क्या करेंगे? अब्दुल करीम, व्हाट वुड बी द सेफ्टी हियर? 1 mark for the safety consideration and 5 marks for additional detail. 1 mark for the safety consideration and 5 marks for the additional detail. Number 1 is, what would be the additional details, Zunaira? You will use gloves to prevent oil contacting the skin, or use an oil tray to prevent oil spillage. What you will write here is use safety consideration में आ जाता है, use gloves to prevent oil contacting the skin or to avoid slippery hands. Perform experiment in a tray to prevent oil spillage. Right? I'm going to write here, or आप ये भी लिख सकते हैं perform. देखिए oil spillage अगर हो जाए ना तो you can slip in a tray. कोई आपने reasonable valid reason देगी और साथ बताना कि आप क्या prevent कर रहे हैं oil spillage. आप क्या करेंगे? You will keep the density or the temperature of the cooking oil constant. You will keep the density or the temperature भी कह सकते हैं। ये additional detail है। 1 नंबर आपका हो गया, बल्कि 4 रहेंगे इसके बाद। You will keep the density or temperature, या density भी लिख लें तो that's fine, or temperature of the cooking oil constant. Or you can also write or keep sigma constant. ये भी लिख सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक चीज लिख दें, you'll score the mark. Sigma density थी ना, ठीक है। 1 नंबर आपको यहां मिलेगा इन तीनों में से। Number 2 is
आप लोग डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ द ऑयल कैसे निकालेंगे? डेंसिटी निकालनी है तो व्हाट यू गोना डू इज मास ऑफ ऑयल इज, अब आपने फर्दर एक्सप्लेन करते जाना है। आप ये भी लिख देंगे टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, आप टाइम पीरियड लेंगे, टाइम लेंगे, टोटल टाइम लेंगे ऑफ एन ऑसिलेशन, so what we're going to do is mass of oil is equal to mass of beaker and oil minus mass of the beaker, इससे mass आ जाएगा। और आपके पास use a measuring cylinder to determine the volume of the oil, use a measuring cylinder to measure the volume of the oil, and you can find the density mass over volume। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे हो गए। ठीक है, और तीसरा नंबर आपको मिलेगा यही इसी का कि आप जो फॉर्मूला लिखेंगे मास ओवर वॉल्यूम, इसका आपको एक और नंबर मिलेगा। जब आप वॉल्यूम निकाल लेंगे तो जब आप तीसरा नंबर आपको मिलेगा इसका, when you will write here that वॉल्यूम को आप बता देंगे कि आप मेजरिंग सेंटर पे मेजर करेंगे, उसके बाद आप निकालेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास आपने फाइंड कर लिया था थ्रू द एक्सपेरिमेंट द बीकर एंड वो जो मैंने आपको शुरू में बताया था, और वॉल्यूम आपने कैसे किया था मेजरिंग सेंटर से। सो यू विल राइट दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द, तो ये इक्वेशन यूज करने का आपको एक और नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर यहाँ मिल गए। अच्छा, उसके बाद जो आपने ऑसिलेशंस निकाली थी, उसके बाद आप जो टाइम पीरियड ले रहे थे, टाइम n oscillations and divide nt by n, where n should be greater than equal to 5, मतलब एटलीस्ट 5 से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे आप n oscillations लें और nt को n से डिवाइड कर दें, इसका एक और नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको फर्दर स्कोर, आप 5 oscillations ले रहे हैं तो आप देखिए ऑब्वियसली आप जो टोटल टाइम होगा आपका वो 5 into 1.6 फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है 8 यहाँ पे, तो 8 टोटल टाइम था, आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 नहीं आ जाएगा। You can write here, use a fiducial rate marker or a reference point in order to measure the oscillations. You can write, so you will describe the method of counting oscillations, use a fiducial mark or a fixed point, or draw a fixed point on a diagram पे बना दे और कहेंगे ये हमने मेंशन कर दिया। Repeat measurements of diameter